Good morning, everybody. Thank you all for joining today. Welcome to our career mentorship program. Without any further ado, let's start our session. Before starting the session, I would like to brief you a little bit about what is eCal Academy. What is eCal Academy platform? eCal Academy is a digital learning initiative of Calorex Group. We have a 26 years of legacy in education. We are a digital learning platform that enabling live and interactive classes, offering individual and group programs. We cater to class KG to 12, preparing the students for their CBSE-based curriculum and skill enhancement, which continues professional development and lifelong learners. Let me brief you a little bit about our mentor, our host for today, Mr. Ramakrishna Bondu. He is a mentor, speaker, and trainer. Today here he is with us to, brief you, share you about career mentorship program, why career mentorship is important for your child. He has 5 years of mentoring, counseling, and training experience that is blended with 18 years of corporate work life. He has spent thousands of hours of one-on-one mentoring sessions, empowering parents and enabling students to make their career decisions. He has conducted over 250 career awareness workshops and life skill webinars also. That has impacted over 20,000 students and parents across 100 schools in 12 different states. He has trained over 1,000 school leaders, principals, teachers across India to build career guidance and ecosystem. So today, sir will guide you why career mentorship is needed for your child and why it is important at the initial stage of your child. Sir, over to you. Yeah, thank you. Thank you for that introduction. Welcome, everybody, on a Sunday morning. Thank you for taking time to join here. We would really appreciate your presence here. Possibly, please turn on your videos. That will make us a little more interactive. And then we will get started. So I want to start off with a question to all of you. What is career according to you? एक career होता क्या है? Anybody would like to answer what is career? You can type in the chat box or you can unmute and speak. According to you, what is career? Actually, sir, good morning. It's Samrigen Singh. I am Manya's father. She is studying in class 10th actually. So for me, career is something which we aspire to become in life. So career is that vehicle which help us to achieve that goal. Means it is a vehicle to reach our goal of life. Okay, wonderful. Very nicely said, sir. Very nicely said. Thank you. Response. Any other answers from anybody? What is career according to you? Anybody? We have Jyoti, Narendra, Harshika, Ramendra, Aditya, and Gaurav ji. There are quite a few. Yeah, what is career according to you? Just type in the chat box so that see, it is not about me talking and then you listening. Let's make it as an interactive. So I would appreciate some more answers. What is career according to you? Okay, let's keep moving. Any students, even if students are here joined the session, you're most welcome to answer, not only parents, anybody. Ideally, we want to know what is your, understanding about career as a word. When you hear, what is career? So I'd like to know from all of you, but we will get going. So please type in your answers in the chat box. So typically, like sir mentioned, it is a vehicle to reach our goal. Okay, fair point. It is you have a goal and career is going to help you reach that goal, serving you as a vehicle. That is nice.
And how many of you think that career as education, career means only education, or career means a job? How many of you really think it this way? It is not just only education. It is not just only job. Career is all about building some great identity for individual. What do I want to become in my life? What is my goal? What is my purpose? Where do I want to reach over the years? It should be looked beyond education, beyond just doing a job. Of course, part of our career, we may be doing job, doing business, become an entrepreneur, or become a self-employed. Job is one mode of work. Career is education is part of career. We'll have to choose something when it comes to our aspiration, our goal. Education is part and parcel of it. But you get good marks, you get in a good institution, and that doesn't get you a great career. Of course, we need marks. Of course, the reputation of the institution, the college, university, which the students are going to study, is going to make a difference. Those prospects, but it doesn't create a great identity. So one need to have a clear destination. What is that I want to become? So career, in all respect, it has to be an identity, and that identity has to be a great identity. कहाँ तक पहुंचना है, वो पहुंच इतना great होना चाहिए कि that we feel proud about ourselves as we grow up, and then the people around us also, we become a buzz about what we do. So keep that in the back of your mind. Don't limit career to education or job. It is also about holistically growing. It is also about holistically growing and building that strong identity. Okay, so career it is not just education, not just job. It is about building great identity. Now let's go further a little bit. When we look at importance of career planning, why do we need to plan career? Most of the parents here, most of the grown-up adults here would typically think about, हमारे जमाने में तो करियर प्लानिंग तो कुछ नहीं है, अभी बच्चों को क्यों चाहिए करियर प्लानिंग? वैसे एक सवाल उठता है हमारे मन में. That is true, because those who are parents to a children of 15-year-old, 14-year-old, or even more, would think that हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो लेके आगे बढ़ गया हम. We are doing well in our lives. So अभी ये करियर प्लानिंग करना इतना जरूरी है क्या? तो उस तरीके का कुछ सवाल होता है हमारे मन में. That is a fair point. But the requirements, when we as parents were choosing our careers or getting into something was different. Now it is different. So starting early 90s onwards, after the reforms, globalization, economic reforms that took place in India, the gates have been opened for the global spectrum. So which has led to a lot of new opportunities. Until then, it was only limited, largely limited to public sector and some of the, very limited private sector. But after the reforms have started and they started giving results, starting, early 2000 onwards, the lot of opportunities, the new age careers or the new technology or the new specializations, new courses, new universities, a new thought process, collaboration with the foreign institutions, these all have actually gone up. As a result, the number of careers have grown up significantly. That is one. And at the same time, the opportunities, the career opportunities, the roles have been multifolded. Uske saath saath, there's a lot of confusion also came into play. That's another issue. So having said that, career planning is very important. And most importantly, every parent wants their child to be happy and satisfied. To make sure there is a happiness and satisfaction in what we do in our life, if we don't plan for it, if we don't make an informed decision, then being happy and satisfied is a big question mark. वो एक चीज है. दूसरी चीज है कि
on an average, every child, 17 to 18 years, they spend at education, expecting some great results after that, getting into a good job or whatever they do. If planning is not done ahead of time, that return on that investment, it is not about money, it is about time, effort. 18 years of time, the investment that parents make for the education of the child over the 18 years, and the effort they put in to bring up the child, that it will be a big question mark. And if we don't plan, we will get somewhere to a no man's land. वो कहीं एक आइलैंड पे चले जाता है, वहां पे कुछ नहीं मिलता है. तो वो डेस्टिनेशन जरूर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए. एटलीस्ट वी हैव ए प्लान, उसके हिसाब से डायरेक्शन लेना है. सो इम्पोर्टेंस की बात यह है कि नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ कोर्सेस, opportunities have grown up to make sure that what we choose is what we know, and as a result the happiness and satisfaction is a possibility. एंड एटलीस्ट ये तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे 18 साल स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करके क्या मिलने वाला है? कहीं सब लोग एक ही जॉब में जा रहे हैं, वो हैप्पीनेस गारंटीड है, सेटिस्फैक्शन गारंटीड है, पैसा तो आएगा, ऑफ कोर्स वी नीड मनी आल्सो. So make an informed career decision so that the effort, time, and money that we are going to spend on our children is having some, guaranteed, at least a visible result. So those are some factors which are important for career planning. And how to plan a career? Typically, when you look at a 5-year-old, 10-year-old, they look at a lot of fascination. एक बॉलीवुड सलमान, शाहरुख और या किसी और का मूवी देख के, और रणबीर कपूर या आलिया मूवी देख के थोड़ा फैसिनेशन मिल जाता है. मैं भी उस तरीके बनने वाला है. विराट कोहली देख के या रोहित शर्मा को देख के मैं भी उस तरीके बनने वाला है. So there's a lot of fascination, and sometimes they get to hear some real life stories on social media or somewhere or the other who have reached to greater heights. वो थोड़ा inspiration भी लगता है. And of course everybody वो performance ज़्यादा अच्छा करता है अपना grades में, 90+% marks आ जाता है. So these are some of the factors which will definitely contribute. But are these the factors which are reliable to make a career? These are the trigger points. Fascination, unless we get to see बहुत तरीके के मूवीज देखने में, सोसाइटी को ऑब्जर्व करने में, कोई भी चीज के हिसाब से some sort of fascination या inspiration मिल जाता है हर एक को. हमारे even as a grown up also, when we read some some story or listen to some story, we feel inspired. So performance, fascination, inspiration are definitely the factors to plan a career, but not the most important. They are part and parcel. अच्छा perform करना है, उसी के हिसाब से a competition, the kids can move and beat the competition. मगर कोई inspiration नहीं है, कोई purpose नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, then again that is also a challenge. So performance, fascination, inspiration, those factors are fine. But what are most important than these? Most important than these are the personality of the child, the abilities of the child, the interests of the child, and of course, how well have you researched about the career that you are thinking about? कोई भी career के ऊपर मन है, उसके बारे में क्या कितना deep हमें पता है? Research के when we say research, what is this career all about? क्या करने वाला है इस career में हम? उसका prospects क्या है? अभी क्या है? अगला 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये जिंदा रहेगा क्या ये career? और ये this career will be fading? And what are the earning potential that is having? What is the demand supply? ये सब research करना है. उसके लिए क्या courses है, क्या colleges are offering these courses, वो सब करना है. And it should be in the best of the child's interest. And naturally, abilities should be mapping to the career that a child makes. And most importantly,
it should match the personality strength of a child. So I'll give you an example. So अभी देखो, समझो आप एक बच्चा है, तो फिर 15 साल का, 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, वो आउटगोइंग है, वेरी कम्युनिकेटिव, कोलैबोरेटिव, नेटवर्किंग, लोगों के साथ जुड़ता है, अच्छा वो, मतलब ये बात करने अच्छा लगता है, आउटडोर में काम करना अच्छा लगता है, आउटडोर जाना अच्छा लगता है। तो उस टाइप का बच्चा को हम लेके एक कंप्यूटर के सामने बिठा के 8 से लेके 10 घंटे तक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करो, क्योंकि आईटी में बहुत डिमांड है, तो इसीलिए आपको अच्छा पैसा भी मिलने वाला है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो फिर ये बंदा क्या होगा, जिंदगी भर ये सोचते रहेगा मैंने गलत जगह पर आके बैठ गया। पैसे तो आएगा, मैं इतना नहीं बोल सकता हूँ कि पैसा तो आएगा, बट लेकिन इसका हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इसका नेचुरल मैच टू द करियर डजंट गो वेल। तो यही बच्चा कम्युनिकेटिव, कोलैबोरेटिव, आउटगोइंग, इनको लेके कहीं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट या मीडिया, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेस, उस तरीके का जॉब में लगा दिया, तो he will enjoy, that boy or a girl will enjoy that role. They'll be happy, satisfied, because सुबह उठने के लिए कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या फायदा है। पैसा तो आएगा, मटेरियल लाइफ तो मिलेगा, अच्छा कार मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा पैसे के हिसाब से, बट खुश नहीं है, अंदर से कोई खुशी नहीं है। So the personality of the child should be considered, and the abilities, interest. After that, a research has to be performed. Of course, the performance, some inspiration, and some fascination is also required. Those are the trigger points, but not the only points. The personality, abilities, interests have to be considered when someone plan for their career. Then it makes a perfect sense. There's a greater good the child can get to. Okay, we will talk about some other aspects of this career. अभी तो हम we have seen it already कि क्या what is the importance of career planning and how to plan a career. अभी देखते हैं कि general question in most parents and child's mind, though there is an idea, what if my child is in 10th grade, what after 10th? If my child is in 8th or 9th grade, then what should they be doing to help them plan for their career? Actually, हम देखते हैं पहले कि what before 10th. Before 10th, there are 4 parameters that needs to be considered. This can start from 7th grade onwards. 7th grade से लेके 10वीं कक्षा तक, तो ये 4 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। पहले उसके मन में ये बिठाना है, बच्चा अभी आप स्कूल क्यों जा रहा है, व्हाट इज द आउटकम, किस चीज के लिए आप स्कूल जा रहे हैं। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी से नॉलेज सीखने के लिए, एजुकेशन कराने के लिए, बट लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस रियली टेल अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एंड इट इज आउटकम क्या है। नर्चरिंग तो करना चाहिए एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर। देखो बच्चा ये आप कर रहे हैं, इसके हिसाब से वो मिलना चाहिए आपको। देखो आगे 5 साल में, 10 साल में क्या मिलने वाला है आपको, मतलब क्या करने वाले हैं आप। इतना तो आउटलुक होना चाहिए। ये नॉलेज कहाँ यूज करना है, जो लर्निंग, कॉम्प्लीमेंटेड लर्निंग जो करता है, वो कहाँ यूज करना चाहिए, किस चीज के लिए लर्न कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एवरी चाइल्ड starting from 7th 8th grade onwards, if not earlier than that, करियर एजुकेशन तो दिलाना है उसको। करियर एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वीकली स्पेंड, लेट द चिल्ड्रन स्पेंड एटलीस्ट half an hour in understanding what are the various careers available, what are the prospects of those careers, what it takes to become somebody in that career. ये मोटा मोटा ये होता है करियर एजुकेशन। जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सारे सब्जेक्ट सीखता है स्कूल पे। ये इंटरनेट पे बहुत सारे टाइम सोशल मीडिया या गेम्स इसी में चले जाता है मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। सो एटलीस्ट half an hour to 1 hour every week, if we can encourage our children to do little bit of research, learning, या थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करो, क्या क्या करियर्स है अभी इंडस्ट्री में, एंड व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स।
careers are not just engineering, medicine, ये चीज नहीं है. So basically the outcome based nurturing एक करना है बच्चों को 10th से पहले. दूसरी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है. स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये दैट इज नॉट सफिशिएंट. उसके अलावा भी स्किल्स, सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वैसे बहुत सारे 21st सेंचुरी स्किल्स कहा जाता है इसको, उसके ऊपर भी ध्यान देना है. And learning has to be complemented. It is not only academic learning. It has to be various other learnings also that should take place. And encourage children to take part of that career education. ये 4 चीजों के ऊपर ध्यान देना है 10th से पहले. जब बच्चा 10th को आ जाता है, इसके दिमाग में ऑलरेडी लग जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स है, उसको ऊपर हमारे अच्छा परफॉर्म करना है. वो दूसरी बात ये है कि अगले आने वालों के सालों में कि 10th एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, तो दैट इज गोइंग टू गो ऑफ, वो अलग बात है. बट एटलीस्ट अंटिल दिस ईयर 10th में जो बच्चा है उसके मन में जो पहली सवाल ये उठता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसे रहा और हाउ मेनी मार्क्स शुड आई गेट, वो चीज एक है. दूसरी चीज ये है कि हम क्या करेंगे 10th के बाद, हम क्या करेंगे. सो उसके लिए what after 10th, जो बच्चा 10th को आ गया, फर्स्ट हाफ ईयर इन 10th have completed, ये 3 चीजें आंसर मिलना चाहिए. वेयर एम आई गोइंग, मेरा करियर डेस्टिनेशन क्या है, उसके लिए क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, उस डेस्टिनेशन रीच करने के लिए कौन सा स्ट्रीम और ग्रुप इन माय 11th एंड 12th आर सूटेबल, एंड क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने से इट विल हेल्प माय करियर गोल. ये 3 चीजें के ऊपर ऑफ कोर्स 10th में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, वो भी है. सो डायरेक्शन टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, स्ट्रीम और ग्रुप सिलेक्शन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, इतना तो पता करना चाहिए, because that is where they start taking direction. So destination भी पता करना चाहिए. चलिए, क्या होता है 10th के आफ्टर. टिपिकली सीबीएसई के अंदर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस विथ मैथ्स एक स्ट्रीम होता है. साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर साइंस, ये एक पॉपुलर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है. दूसरा होता है कि साइंस विद बायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री. द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है. एंड द नेक्स्ट ऑप्शंस आर कॉमर्स विथ मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स. नाउ इसके अलावा ये ह्यूमैनिटी स्ट्रीम भी एक होता है. Sir, I think your screen is freezed because we are on how to plan a career only. Okay, yeah, good that you told me, otherwise I would have gone only assuming. Let me reshare. अभी दिखाई दे रहा है सर? Yes. What before 10th, वही दिखाई दे रहा है आपको अपने स्क्रीन पे? Yes. Okay, terrific sir, thank you sir very much. So I'll just quickly recap. So before 10th, 7th, 8th, 9th इन कक्षा में जो पढ़ाई कर रहे बच्चा, इसको आउटकम बेस्ड नर्चरिंग करना है एज अ पेरेंट. क्या, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं आप, क्या आने वाले दिनों में आपको आप क्या करने वाला है, वो सोच उसका दिमाग में बिठाना है. इट इज नॉट अबाउट पासिंग 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, 9th ग्रेड, 10th ग्रेड, उसके बाद 11th में चले जाओ, उसके बाद 12th एंड उसके बाद कॉलेज चले जाओ. वो आउटकम क्या है, किस चीज के लिए, देयर हैज टू बी अ पर्पस. वो थॉट उसके दिमाग में बिठाना है, वो एक चीज है. दूसरी चीज है कि लर्निंग हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड. खाली academic learning is not sufficient. There has to be other learnings also, and holistic development. It is not about the academic subjects, it is about social skills, personality development, it is about communication skills, more of a 21st century skills. बहुत सारे skills भी develop करना चाहिए. And साथ साथ very important thing is career education. career के बारे में research करना शुरू करना है starting 7th or 8th grade onwards. So क्या क्या करियर्स है अभी इंडस्ट्री में, अभी क्या डिमांड है,
how can one become in that career, ये सब बातें 10th के से पहले ही ये सब all these have to be instilled in the child's mind. जब बच्चे 10th के अंदर आ जाता है उसको anyway he has to answer after 10th में क्या करने वाला हूँ, what is my career goal, what is my career destination, वहां जाने के लिए क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा ग्रुप या स्ट्रीम लेने वाले हैं हम, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रहा उसके अंदर, ये सारे चीजों के ऊपर दे हैव टू बी प्लानिंग जो बच्चा 10th है। तो 10th के बाद जनरली सीबीएसई के हिसाब से हम बात किया तो typically as you see on your screen these are the streams, science with maths physics chemistry plus computer science as an optional subject. अगला स्ट्रीम या ग्रुप होता है कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री विच इज कॉल्ड एज साइंस विद बायोलॉजी और मेडिकल स्ट्रीम, एंड बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिल जाता है, एंड आफ्टर दैट कॉमर्स विथ मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, and of course arts or humanities, that is another option that we have depending on the destination. One of these directions have to be made, and most importantly for some of them who are aspiring to be performing arts related or sports related careers, please keep in mind National Institute of Open Schooling is a good option for them to keep in mind. ये है on demand education, on demand examination, उस तरीके का है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. So this is picking up the momentum. It is the recognition is at par with the typical state board or CBSE board boards, and the enrollment to NIOS has been growing up because a lot many parents, बहुत सारे parents बच्चों को explore करने दे रहे हैं outside of the regular school system, जो चाहे वो स्पोर्ट्स होता है या आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग या बहुत सारे, and of course there are many other skill based education the central government offers typically after 10th grade. Those are the options depending on the need, especially this is more suitable for the rural youth who are having some family difficulties or financial difficulties. In सबको ये they all look good, the skill based education. Of course the urban population also can look at it, but NIOS as I've highlighted वो एक अच्छा option है that can be considered. Typically in the state boards, depending on which state you are, there is this MPC, BIPC, humanities, vocational groups, there is ITI, technical training, there are technical short-term, long-term vocational courses, polytechnic 3-year polytechnic courses, and there are triple ITs, 5-year integrated programs in some states, and there are some technical certifications. This will change from state to state depending on the state board, but this is typically how it looks like. Okay, so those are some of the options that can be looked in when it comes to what before 10th and what after 10th. Okay, let me reshare my screen again here and talk about some of those STEM oriented careers to give you an overview. So abhi tak humne baat kiya how a career should be planned, what is the importance of career planning, what are the parameters that are going to play a crucial role when it comes to career planning. And उसके बाद हम चर्चा किया कि before 10th क्या करना है, 10th के बाद क्या options होता है, 10th में कैसे किस क्या possibilities देखना चाहिए, what questions to be answered, ये सब बात किया. चलिए हम अभी देखते हैं कि थोड़ी this is an indicative list, not an exhaustive list. STEM careers, STEM के full form किसी को पता है? Can anybody try what is the full form of STEM? STEM का full form क्या होता है? It is science, technology, engineering, and mathematics. Science, technology, engineering, and mathematics. So today in this webinar, we're going to talk about some of the STEM-oriented careers. देखिए STEM careers, science, technology, engineering, mathematics. Science या चाहे वो physics, chemistry, biology, zoology कोई भी हो, ये science. Technology, engineering, and mathematics. देखिए biologist,
physicist, astronomer, mathematician, environmental scientist, oceanographer, geologist. देखिए इसके अंदर oceanographer, meteorologist, environmental scientist, they are all some of the new age careers, we can say, though they are contemporary. These are the buzzwords in the recent past. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और करियर्स के बारे में देखते हैं. माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स इज अनदर career. Biomedical engineering, of course, civil, electrical, mechanical, computer, software development, these are all already quite popular. And data scientist is another aspect to be noted, which is already in the last 5 to 10 years they have picked the momentum, these genetics, microbiologists, data scientists as well. And देखिए robotics, nuclear, material, aerospace, mechatronics, quantum physicist, renewable energy specialist, some of them have picked up momentum in the recent past, in the last 5-10 years time. So most of the time parents are only limiting themselves to traditional branches in engineering on the science side, but there are बहुत सारे options है हमारे पास. ये सारे देखिए इधर pharmacist, dentist, surgeon, veterinarian, pharmaceutical research scientist, neuroscientist, nanotechnologist, forensic scientist. वैसे बहुत सारे ये सब STEM के अंदर ही आ जाता है. Some of them are physics based, some of them are biology based, some of them are healthcare and medicine. चलिए आगे बढ़ते हैं. Science educator, medical lab technician, research biologist, these are all like allied medicine का careers होता है. Artificial intelligence researcher, remote sensing scientist, geographic information systems specialist, ecologist, and of course some of them furthermore they are like trending and futuristic. Artificial intelligence engineer, robotics engineer, cyber security analyst, quantum computing specialist, data scientist. ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है. करियर लैंडस्केप में बहुत सारे हैं. आई वांट यू टू make it a point to let your children explore these possibilities rather getting stuck to only the traditional conventional careers. इतना तो मौका दे सकते हैं बच्चों के लिए, एक्सप्लोर तो करने दीजिए. वैसे भी हम हैं बैकएंड में थोड़ा उसको गाइड करने के लिए. पेरेंट कैन गाइड, वी एज मेंटर्स एंड करियर काउंसलर्स वी आर हियर टू गाइड. एक्सप्लोर करने में उसको क्या, उसका नॉलेज भी बढ़ता है. दे डोंट लिमिट देमसेल्फ ओनली टू दोस. बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर, ऑगमेंटेड रियलिटी, virtual reality, mixed reality, 3D printing, environmental engineer, they are going to be very popular careers in the future. Okay, so 3D printing एक है. Genetic counselor, nanotechnology, virtual health, telehealth, GIS specialist, renewable energy technician, vertical farming, cryptography, blockchain technology, ये सारे sustainable agriculture, urban planning, smart city designer, clean energy researcher, human machine interaction specialist, prompt engineering. So these are just an indicative list of careers in the STEM area. Some of them are contemporary, which have already picked up the momentum. कुछ चीजें हैं वो नए आया है. आने वाले सालों में उनके लिए बहुत prospects ज्यादा है. So that is the sum up of some of the STEM oriented careers. I thought in this webinar today we will talk about STEM. Maybe sometime I think we are having this weekly webinars. We will talk about some other category of careers in the upcoming webinars. So in that given time, I could bring only a limited indicative list of careers for you to get an overview. थोड़ा बहुत तो आइडिया दिलाने के लिए मैंने जितना हो सके ये 30-40 मिनट के अंदर उतना ही वो स्लाइड्स पे लगा सकते हैं. बट लेकिन देर आर मेनी मोर, देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करियर्स. वो बहुत सारे करियर्स है. इसीलिए मैं फिर दोबारा इंसिस्ट कर रहा हूँ, आपको अपील कर रहा हूँ सारे पेरेंट्स को, बच्चों को करियर एजुकेशन दिला दे. इसमें कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
इंटरनेट में एक आधा घंटा एवरी वीक, आस्क देम टू रिसर्च अबाउट 1 2 3 4 करियर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करने दीजिए। आजकल चैट जीपीटी है, गूगल सर्च इंजन है, बहुत सारे है। थोड़ा नॉलेज तो बढ़ाइए, उतना तो कराइए। तो उसके लिए क्या होता है, उसको नए नए आइडियाज मिलना मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो ऐसे ही लगे रहता है कि स्कूल जाना है, आना है, सोना है, पीना है, खाना है, इसी में लगे रहता है। बाहर जाके खेलना है, वीडियो गेम खेलना है बाहर। आई डोंट थिंक मेनी ऑफ देम गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग। लगे रहना है, टीवी देखना है या तो वीडियो गेम खेलना है। थोड़ा बहुत तो उस स्क्रीन टाइम इसमें भी डाइवर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स, सोच लीजिए। इसके हिसाब से थोड़ा हमारा नॉलेज करियर के बारे में बढ़ता है, हमारे जो नए नए ऑप्शंस के सीखने को भी मिलता है। लेकिन वो अच्छा है कि बुरा है, कि वो डिमांड है कि नहीं, हम तो है आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर, करियर मेंटरिंग काउंसलिंग करने के लिए। यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड देन टेक आवर हेल्प। मोटा मोटा आई विल लीव यू विद दैट थॉट, एवरीबडी। करियर प्लानिंग कैसे करना है, why career planning is important, what are the parameters that are crucial, like personality, ability, interest, career planning क्यों करना है, happiness, satisfaction, return on investment, that is crucial, and what before 10th and what after 10th, and then some of those STEM oriented careers. So that is the quick brief that we could talk in that 40 minutes time. Now I'll open it up for questions and then see up, you can share your views or you can ask questions under that career planning. Chaliye, who have these questions, you can type in the chat box or unmute and ask. We'll be more than happy. Yes, thank you very much, sir. It was indeed a very good session, actually. First time, as a parent, we have attended any such webinar, and we have got, lots of clarity and information regarding like STEM. So, looking forward to, some more such sessions. Thank you, sir. Thank you. You're most welcome. I think Sonam ji and ECAL team, our team is going to be in touch with you. We'll let you know the upcoming webinars or any other details, that are possible. You're most welcome to join us. We'll be more than happy to assist you, sir. Thank you so much for those kind words. And I have a couple of questions in the chat. Let me go with them. What are the options for the student who don't want to go in science? Yes, definitely, ma'am. Definitely, sir. Here, there are definitely, if you look at non-STEM careers are more than the STEM careers. Let me tell you this. Non-STEM का मतलब क्या होता है कि they are not part of science, technology, engineering, mathematics. ये humanities, commerce के अंदर बहुत सारे careers होता है. We are going to bring one of them, at least we'll touch upon one of them at least in these webinars in that given time. So मोटा मोटा ये होता है कि commerce और ह्यूमैनिटीज, ये दोनों के अंदर ये नॉन स्टेम कहा जाता है. सो कॉमर्स के अंदर ट्रेडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज लाइक CMA, CA, CS, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग. ह्यूमैनिटीज के अंदर भी बहुत सारे हैं, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट. वैसे बहुत सारे करियर्स हैं नॉन साइंस स्टूडेंट्स को भी. We will anyway be talking about these careers in one of our webinars in detail, like we touched upon about STEM careers, sir. And there's another question. I have career confusion. I passed 12th from CBSE this year with 70% in PCM. Okay, Yash is asking that question. Okay, what do you want to become in your life? Did you, आप क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में, क्या बनोगी आप? उसके लिए थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी है, किसके ऊपर है आपका मन, किसके ऊपर ज्यादा लाइकिंग है, इतना तो होगा ना. अभी तो आप 12th पास हो गया, यश. So that is the first point. That is one first point that you need to answer yourself. उसके हिसाब से आप choice. Obviously, most students would look for engineering, but there are mathematics, statistics,
actuarial science, design, architecture. वैसे बहुत सारे options after PCM. In fact, except medicine and healthcare, you have technical eligibility to any careers in this world. Yes. So if you want to have a little more clarity, you can reach out to us one-on-one. We will be able to help you, guide you, Yash, if that's going to help. Okay, but I gave you a general answer in the group. Okay, Narendra ji has asked a question. My son is in Cambridge syllabus. What are the options after 10th? Nice, sir. That's a nice question. I think you're saying international curriculum. You can continue in the same curriculum for 11th and 12th. They offer different subject combinations in the same Cambridge or IB. You can continue, but the question is, what are your expectations as a parent and what are your child's aspirations? उसका ड्रीम क्या है, उसका सपना क्या है, सपने में क्या देखते हो, क्या बनने के लिए उसको he has an idea, and what are you looking at as a parent expectations? हो सकता है कि I want to give a free hand to my child, whatever he or she want to become, they can become, which is fine, but कहीं तो जाना है ना, we'll have to reach certain point. वो क्या है, तो देखिए ऐसा है. So if you want to continue in that Cambridge or IB, those syllabuses, you can continue. But if you are thinking of, engineering or medicine or design or law or, fashion technology, fashion design, उस तरीके के exams के बारे में आप सोच रहे हैं, मतलब in Indian education system, these are all largely based on the CBSE curriculum. NCERT गाइडलाइन के हिसाब से ये सारे एग्जाम्स है, लाइक नीट या जेई या क्लैट और डिजाइन, ये सारे उस लेवल पे होता है. सो यू नीड टू बी क्लियर. You want to let the child explore typical liberal arts kind of education, new age careers, not the traditional conventional that are quite popular in the Indian education system. वो उतना तो क्लैरिटी लीजिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकता है कि क्या करियर है, क्या किस में जाना है. बट लेकिन जो करियर्स है, इट डजंट मैटर वेदर इट इज अ स्टेट सिलेबस, सीबीएसई, कैम्ब्रिज और आईबी और एनी अदर सिलेबस, करियर्स आर सेम फॉर एवरीबॉडी. बट आप किसके अंदर, किस डेस्टिनेशन के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन लेना चाहोगी आप, वो दैट क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड, नरेंद्र जी. That is very important. Careers are common for every state, as in any state syllabus or CBSE or IB or Cambridge. The end careers are going to be same, but these are the mode of transportations how you're going to take. But typically, जो students Cambridge or IB curriculum पे है, they would ideally look for the non-conventional careers. Typically, they don't get to engineering. Typically, they don't get to medicine. They will explore like liberal arts kind of a programs or some of the management related programs or a clear direction के हिसाब से आगे बढ़ते हैं. आप सोच लीजिए. I'm just giving you some ideas here. Okay, and Yash says, sir, interest समझा नहीं आता है. तो अभी हमारे साथ one-on-one पे आ जाइए, one-on-one बुक कीजिए, अभी बताएगा. सोनम मैडम विल शेयर यू द लिंक्स, how to get, so that we will help you get there, my dear friend Yash. ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है. दिस इज अ नॉर्मल, डोंट पैनिक. आपके उम्र में ये कंफ्यूजन क्वाइट कॉमन है. डोंट बी टेंस्ड, don't be panicking. We will help you. Okay. Gaurav ji, you have a question. You want to type in or you want to unmute and ask, sir? सर आई विल अनम्यूट एंड आस्क. सर एक चीज ये पूछनी थी. हमारा बच्चा जो है वो क्लास 11th में है. क्लास 10th में उसके मार्क्स तो आए साइंसेस में, बट सो मार्क्स थे. बट स्टिल उसका इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस काफी अच्छा था. और जो टीचर्स हैं उनका भी कहना यही था उस टाइम पे कि द चाइल्ड इज प्रोग्रेसिव इन साइंसेस, तो आप इसको मैथ साइंस ही करवाइए. हमने डाल भी दिया, चलिए उनके कहने से उसमें. एंड शी वेंट इन फॉर द कोचिंग. वहां पर उस बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, एवरी टाइम शी इज गिविंग टेस्ट, उसको मार्क्स तो आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी. कोचिंग है मैडम ये? हर बार पूछो तो कहते समझ आता है, लेकिन मैं वहां पे
क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ, मतलब है उसको प्रॉब्लम आती है वहां पे। कौन सा कोचिंग ले रहे जी ये बच्चा? ये कोटा में ले रही है, एलन का। जेई जेई और जेई नीट? का, जेई का, हाँ जी। जेई का ले रहा है, ठीक है। तो साइंस में इंटरेस्ट है बट मार्क्स सो आया है, बट वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मार्क्स नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, समझ आ रहा है उसको। बट लेकिन समझ मार्क्स आता तो, है, लेकिन मार्क्स तो दिखते नहीं हमारे को, तो हम क्या समझें कि उसको समझ हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। तो आप अकेले नहीं है मैडम, बहुत सारे हैं। इसी 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 चक्कर में अटक जाता है, एक बार एनरोल कर लेता है या चाहे कोई भी कोचिंग में, उसके बाद बाहर नहीं आ पाता है। बट लेकिन इतना तो आप ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होना इज नॉट द एंड। आई मीन, इफ अ दैट चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड। हाँ वो इतना तो भरोसा दीजिए बच्चों को, क्योंकि दिस चिल्ड्रन आर गेटिंग वेरी पैनिक बिकॉज देर इज लॉट ऑफ पीयर प्रेशर। इतना तो कह दीजिए उसको, भाई कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सीट तो मिल जाएगा, आईआईटी में करना, एनआईटी में करना, इतना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी बिकॉज हार्डली देर आर 50,000 सीट्स पुट टुगेदर इन एनआईटी एंड आईआईटी। 18 लाख लोग लिख रहे हैं जेई एग्जाम मैडम। जी खाली 50,000 लोगों को भी मिलता है, उसके अलावा भी बहुत सारे है, उसको बता दीजिए। भाई आप बिट्स बिट्स फिलानी के ऊपर देख सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अपना स्टेट, होम स्टेट के हिसाब से स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी होता है। सर, इंजीनियरिंग आई करना, एग्री टू ऑल दीज थिंग्स। एंड मैंने उस चीज के लिए माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर रखा हुआ है, अपना अच्छा भी है। और बच्चे का भी। बट लेकिन मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि विद एवरी टेस्ट शी इज गिविंग ओवर देयर, she is facing a downfall in the marks. हाँ वो उसको वो अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको ना, वो आई थिंक that there is some thing to be discussed with the team over there along with the student and the faculty members and see what exactly नुकसान कहाँ पर है इसको, दिक्कत कहाँ हो रहा है इसको, वो पता करना है। सर एक्चुअली उनका डिटेल्स तो आता ही है, क्वेश्चंस का, क्वेश्चन विद आंसर डिटेल्स आता है कि आपके बच्चे ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने आंसर्स किए और कितने ठीक किए, कितने गलत किए, वो पूरा डिटेल हमारे तक भी आ रहा है। नहीं नहीं लेकिन सर वो तो मैं देख रही हूँ उसका ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में शी इज लाइक नॉट परफॉर्मिंग सो वेल। तो अब जैसे अब वो बच्चा तो अड़ा हुआ है कि मुझे साइंसेस ही करना है। मैंने उसे कई बार ऑप्शन दिया, मैं कहा बेटा साइंस इज नॉट द एंड, वी शुड ऑल्सो लुक फॉर द अदर करियर ऑप्शंस ऑल्सो। राइट बट राइट, अब अगर हम उसको अदर करियर ऑप्शंस देते हैं तो हाँ ना कॉमर्स में समझ में आ रहा है, कॉमर्स में सीए 2% बच्चे, सिर्फ 2% बच्चा कम करता है सीए। नहीं नहीं, कॉमर्स मतलब कॉमर्स मतलब खाली सीए नहीं है मैडम, बहुत सारे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, एडमिनिस्ट्रेशन करके कर बैठी ये हूँ। सारे कॉमर्स के हिसाब से ही आगे बढ़ता है। तो सीए, यू आर राइट, पास परसेंटेज इज वेरी लेस। अगेन सीए इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, बहुत सारे हैं। सो कोई भी कर सकते हैं। इतना तो आप इस लेवल पे, आई थिंक द चाइल्ड इज ऑलरेडी इन 11th ग्रेड, आप इतना तो करिए। आई एम हैप्पी दैट भरोसा तो ले लिया, आप खुद को भी भरोसा किया, और बच्चों के दिमाग में भी यू हैव प्रिपेयर्ड इट, विच इज नाइस। नाउ आगे आप फेस टू फेस मुलाकात कीजिए, मगर वहां पे जो कोचिंग के फैकल्टी के साथ, बच्चों के साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट में एक मुलाकात करके आप देख लीजिए कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर पा रहे। तो कुछ दूर कर सकते हैं हम, कुछ मदद कर सकते हैं, वो कर लीजिए। बट लेकिन आप, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑलरेडी मेड अप योर माइंड दैट ये नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो यू आर राइट। बीएससी, मगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, वो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना है, वो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं, बीए कंप्यूटर्स भी है। इट डिपेंड्स ऑन विच स्टेट आर यू इन, विच इज योर होम स्टेट एंड वेयर ऑल डू यू वांट टू गो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट लेकिन वो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, वो चीज के लिए आई डोंट नो, आई कैन गिव ए सॉल्यूशन हियर नाउ, बट आई कैन सजेस्ट आप वो फैकल्टी के पास फेस टू फेस डिस्कस करने में थोड़ा तो आपको
ये इसको एटलीस्ट यू कैन मेक सम प्रोग्रेस. दैट्स व्हाट आई कुड सी मैम. ओके सर, मैं उनकी फैकल्टी के पास भी गई थी, द वे यू आर सेइंग, एंड हमने इसको उनके साथ कोऑर्डिनेट भी किया प्रॉपरली, एंड दे वर सेइंग कि इसका हम देखेंगे, एंड देन दे वर सेइंग कि जब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं वहां पे 1 मंथ लगा कर आई इसके साथ, बच्चे के साथ, तो क्योंकि आई वॉज बिट कॉन्शियस कि ये चीज, बच्चा जो है डिप्रेस हो जाएगा, अब करियर तो क्या बनेगा, बच्चा ही खराब हो जाएगा हमारा तो डिप्रेशन में. तो उससे पहले कि वो डिप्रेस हो, हमने पहले पहुंच के वहां पे उसको कैच अप किया इस चीज को, वहां पे उनको साथ बैठ के वहां पे डिस्कस भी किया, सब किया, लेकिन मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, और बच्चा मेरा अड़ा हुआ है कि मुझे ये साइंसेस ही करना है, उसको और बोल उसको दीजिए. जबकि दिख रहा है कि इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, टीचर्स कहते हैं समझ तो मैम इसको पूरा आ रहा है, फैकल्टी के टीचर्स कहते हैं. या सब लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको इतना भरोसा दीजिए. इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे कोर्सेस है साइंस के अंदर ही. राइट. साइंस लिया तो खाली इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया साइंस के अंदर ही कर सकते हैं वो. ओके, बीएससी के अंदर बहुत सारे बीएससी ऑप्शंस के हैं. राउंड करा जाएगा. हाँ, तो बीएससी बट के अंदर उसका बहुत सारे आगे ऑप्शन. प्रोस्पेक्ट्स क्या है सर, बीएससी करने के बाद? ये दूसरी तरीका है मैडम, जस्ट लाइक दैट. अभी आगे बढ़ने के लिए इंजीनियरिंग बहुत पॉपुलर हो गया बिकॉज ऑफ 4 years, बस उतना ही है. बट लेकिन इसके दूसरी तरीका है. मान लीजिए आप आईटी में जाना चाहोगे, मतलब आप क्या बनना चाहोगे वो बच्चा, आपको. वो उसका तो कंप्यूटर्स की तरफ ही झुकाव ज्यादा है, तो मैं क्योंकि ज्यादा मैंने गेस किया वही भी होता है. आते थे 10th में उसके अच्छे से, बिकॉज वही शी होता वाज है. इन आईसीएससी. नहीं नहीं, वही होता है. मेनी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वांट टू गेट इनटू आईटी, व्हिच इज फेयर थिंग बिकॉज देयर इज अ डिमांड. सप्लाई तो करना चाहिए, पैसा तो अच्छा मिल रहा है, बट लेकिन इंटरेस्ट तो होना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा. तो आप उनको बताइए बीएससी कंप्यूटर्स में कंप्यूटर मार्क्स साइंस. पूरे आते थे. नहीं नहीं, बीएससी कंप्यूटर साइंस वो मैक्सिमम 12th मार्क्स के हिसाब से ही सीट मिलता है. थोड़ा बहुत तो कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, थोड़ा बहुत तो एंट्रेंस रहता है. वो इतना जेई नीट लेवल से उतना नेशनल लेवल नहीं रहता है. वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे, कॉलेज लेवल पे रहता है, और 12th मार्क्स के हिसाब से सीट मिलता है. मगर वो भी नहीं ओके. मिला है, समझो कि वो भी नहीं मिला है, सोचो कि मार्क्स थोड़ा बुरी हुआ है, तो फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक और है. उसी के हिसाब ओके. से उसके बाद मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करके कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स सीख के आईटी के अंदर, दे कैन गेट इनटू जॉब्स. दे विल आल्सो बी हायर्ड, दे आल्सो गेट कैंपस हायर्स, दीस बीसीएस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीएस एंड ऑल, नॉट ओनली इंजीनियरिंग. इतना तो भरोसा दे ओके. सकते बच्चों को आप. मगर आपको राइट, डिटेल्स राइट. में घुसना है तो आई वुड सजेस्ट वी कैन हैव ए वन ऑन वन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू मैम. I will राइट see सर. there are some more questions there. Okay. सर, आप कांटेक्ट कैसे किया जाएगा सर आपसे? Okay. Sonam ji, you want to leave our Yes, further? sure. So Sure. I'll leave a yes. contact number as well as ओके. the links where you can come and register, ma'am, here in the chat ओके. box right now. राइट, प्लीज डू सेंड. Okay, thank you so much. So you can continue. No, थैंक yeah, यू. it's all over to you. I don't see any more questions in the chat box. If you have to Okay. make any announcements, Sonam ji. Okay, yes, sure. I would like to invite one of my team member. She's an education counselor here in ECAL Academy. So she'll brief you about the features of ECAL Academy. Shraddha? Hello. Hello. Yes. Am I audible, Sonam? Yes, you are audible. Okay. First of all, hello everyone. And it's already afternoon. And आज नवरात्रि का 8वां दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को अगेन आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. एंड आप प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप लोग प्लीज अपना जो ऑडियो है वो कैन यू प्लीज ऑन जस्ट फॉर 1 or 2 minutes. Audio, I'm talking about audio. Yeah, Yes. So happy Navratri to all our respected parents. same to you, ma'am. Happy Navratri to you Okay. also. Right. And how was your session, first of all? It was quite interesting. Okay, fine. So, see, now I would like to brief you about the student mentorship program. Okay.
Yes, Shraddha, it is visible. Yes, Shraddha, you're audible. Please जी continue. सॉरी सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर ने आपको बताया कि स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम होगा कैसे और उसमें बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे कि वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचे, राइट? अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला जो है दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिपोर्ट। मतलब कि बच्चे का एक एकेडमिक टेस्ट होता है जिसके अंदर उसमें एनालिसिस किया जाता है बच्चे के एकेडमिक गैप्स का, राइट? कि बच्चे के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, राइट? और क्या उनका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बच्चे को और पुश कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं उनके एकेडमिक पार्ट्स में, ताकि वो और ग्रो करें। दूसरा आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट से ये पता चलता है कि बच्चे का पर्सनालिटी क्या है, राइट? क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग होता है, राइट? सो हियर हम लोग बच्चे के एप्टीट्यूड टेस्ट से ये एनालिसिस करेंगे कि वो कौन से करियर में जा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है काउंसलिंग सेशन। फर्स्ट उसके अंदर ये रहता है कि बच्चे का जो टेस्ट का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स के साथ में पूरा डिस्कशन होगा, क्योंकि जो आप बच्चे का रिपोर्ट बनता है आफ्टर टेस्ट वो रहता है पूरा डिटेल रिपोर्ट जिसके अंदर पूरा ग्राफ, ग्रेड्स, मार्किंग्स, एवरीथिंग होती है इन डिटेल। तो उससे क्या कि आपको पूरा डिस्कस किया जाएगा बच्चे के रिपोर्ट्स के लेके, बच्चा कौन से फील्ड में बेटर है, कहाँ उसको और ज्यादा मेहनत करनी है, फिर बच्चे के करियर के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। सेकंड जो हमारा काउंसलिंग सेशन है उसके अंदर करियर रिलेटेड क्वेरीज एंड गाइडेंस। जैसे आज आप सभी ने पूछा, राइट, कि मेरा बच्चा अभी ये प्रिपरेशन कर रहा है कोचिंग सेंटर में, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, वी डोंट नो द रीजन ऑफ दैट, कि बच्चा क्यों मतलब कहाँ अटक रहा है जिसकी वजह से वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। काफी सारों को ये क्वेरी है कि मैं 12 क्या करूं, राइट? तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होंगी कि मैं क्या, मुझे मुझे क्या करना है, राइट? तो आप उसके रिलेटेड पूरा एक डिस्कशन होगा। आपके मन में जो भी क्वेरीज है वो सारी चीजें आपकी ये काउंसलिंग सेशन 2 में क्लियर होंगी। एक बार ही देखो, टेस्ट दे दिया, आपका रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट के बेस पे काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग के बेस पे आपके करियर रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व किया। उसके बाद में सबसे जो मेजर फैक्टर आता है करियर पाथ प्लानर। मतलब जैसे कि क्या है, प्लानिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम लोग आपको करियर पाथ प्लानर में हेल्प करते हैं, पूरा आपका मैप कैलेंडर बनाते हैं, आपके पर्सनालिटी, आपके प्रोफाइल, आपके एकेडमिक्स, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, उन सब के बेस पे आपको एक पूरा करियर पाथ प्लानर हम बना के देंगे। नेक्स्ट यू कैन सी द कोर्स रिकमेंडेशंस, राइट? बिकॉज हम लोग आपको आपका करियर गोल अचीव करने में डेफिनेटली हम आपको पूरा हेल्प करने वाले हैं हैंड टू हैंड। सो इसके अंदर हम आपको कोर्स रिकमेंडेशंस देंगे कि आप अपना करियर गोल अचीव करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट है, राइट? ये मैटर नहीं करता क्योंकि आजकल 500 से ज्यादा कोर्सेज है, पर 500 में से वो एक ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपको आपके करियर गोल तक पहुंचाएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उस चीज में हम आपको हेल्प करेंगे, दैट इज अ मेजर फैक्टर। रिज्यूम बिल्डिंग, राइट? कि जो हमारे एक्सपर्ट है उनके थ्रू हम आपका पूरा एक रिज्यूम बिल्डिंग करवाएंगे। जैसे काफी सारे लोग ऐसा कहते भी कि रिज्यूम की क्या जरूरत है, मतलब दे आर लाइक इन अ 10th ग्रेड, 11th ग्रेड, 12th ग्रेड, बट नो, रिज्यूम इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, जो कि हमें अभी से हमारे बच्चों को इस बिल्डिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, सिखाना चाहिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग, राइट? जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू हम लोग आपका पूरा हायर एजुकेशन के लिए पोर्टफोलियो बिल्डअप करवाते हैं, राइट? क्योंकि अब जैसे पोर्टफोलियो क्या होता है, बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव लाइक इंटरेस्ट ऑफ एरिया, रिस्पेक्टिव कोर्स, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो वो क्या होगा, पूरा 1 to 1 डिपेंड करेगा। सो वो भी हम आपको पूरा सिखाते हैं हमारे एक्सपर्ट थ्रू, हाउ यू हैव टू मेक योर portfolio. Now you are going to get the special discount 20% on all our courses that assures you the best results. Next जो है हमारा
हायर मेंटर्स जो एजुकेशन होता है बच्चों का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उसके अंदर भी हम लोग बच्चे को पूरा गाइडेंस देते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का, राइट। जैसे बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो प्रोफाइल है, ये सब के बेस पे ही आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, राइट। तो हम लोग आपको पूरा गाइडेंस देंगे और आपको ऑप्शंस देने में भी हेल्प करेंगे थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। इंटर्नशिप्स, जैसे मान लीजिए कि आज बच्चे ने बोला कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, पर्टिकुलर जो भी उनका है, चाहे वो कोडिंग में जाना चाहते हैं, साइकोलॉजी है, डिजाइनिंग पार्ट है, फिर मेडिकल की हम बात करें, मेडिकल क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है, तो उनका जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है उसके रिलेटेड हम लोग उनको इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। बिकॉज वो इंटर्नशिप भी उतनी ही मायने रखती है बच्चे के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रायर बेस पे हम लोग उनको प्रिपेयर करवा रहे हैं हर एक चीज के लिए, राइट। तो वो एक मेजर फैक्टर है। इंडस्ट्री मेंटरशिप सेशन के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर का मतलब ये है कि हम आपको इंडस्ट्री में भेजते हैं, कनेक्ट करते हैं उनके मेंटर के थ्रू, जो कि आपको एक प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो आप गेन करेंगे आपके करियर के लिए। कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस, लाइक जैसे एज वी हैव सेड अर्लियर कि बच्चे का पर्सनालिटी हमें क्लास 8 क्लास 9 से ही डेवलप करना चाहिए, तो हम लोग आपको पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस करवाते हैं, जिससे कि बच्चा कॉन्फिडेंट, विजन उसका क्लियर हो, बच्चे को ये पता रहे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही है, कौन कौन से मेरे पास करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ब्लर होते हैं। नाउ वी वुड लाइक टू गो अहेड फॉर द डाउट क्लियरिंग कोर्सेज सेशंस ऑन ईकल, राइट। अब जैसे कि ये सारे फैक्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के करियर, उनके गोल्स अचीव करने में, बट साथ ही साथ एकेडमिक्स जो पार्ट है, हम उसमें भी उनको पूरा हेल्प करते हैं। कैसे? उनके डाउट जो सेशंस होते हैं वो उनके सॉल्व करते हैं एकेडमिक्स पार्ट के। मान लीजिए बच्चे को उनके कोई भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, राइट, तो वो हम उनको रिजॉल्व करने में पूरा पूरा हेल्प करते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड बूट कैंप्स किसी को पता है? आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चंस टू ऑल आवर पेरेंट्स जो कि अभी अवेलेबल है। आप आपका ऑडियो ऑन करके भी मुझे आंसर कर सकते हैं। इफ एनीवन नोज के व्हाट इज बूट कैंप्स? हेलो हेलो। Yes, you're audible, Shraddha. ओके, ऑडिबल, ओके। सो सी, Yes, बूट कैंप्स का मतलब ये रहता है कि आपका हम लोग वर्कशॉप्स करवाते हैं, जैसे इंटर्नशिप्स होती है, इंडस्ट्री विजिट्स होती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स होते हैं, का भी उतना ही मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चे के करियर में। सो हम लोग उनको बूट कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। नाउ यूनिवर्सिटी फेयर, मतलब कि आपको एक्सेस मिलता है मोर देन 100+ नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस का, जिसके अंदर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर टेकिंग द एडमिशन और एनीथिंग। सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड एक्सपोजर टू access more than 100+ universities and colleges, national and international. So these are the major factors that we are going to features that we are going to provide you, that we are going to help you, teach you throughout your year for making your child a better future, right? उनको उनके कोर्स सिलेक्शंस, करियर ऑप्शंस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, एडमिशंस, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बच्चे के करियर मेकिंग में, उसमें हम आपको हैंड टू हैंड प्रोसेस में पूरा हेल्प करेंगे। ओके, सो नाउ आज मैं आपको ये भी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि हम लोग जो इंटरेस्टेड पेरेंट्स हैं उनके लिए दो एक स्पेशल ऑफर है, और वो भी हमारे जो आज के दिन में आज रजिस्टर करते तो 5 पेरेंट्स को ये बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट 5 पेरेंट्स को। उसमें ये है कि पहला, कि आप हमारी जो सोनम, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज शेयर यू द लिंक ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट की हमारी जो लिंक है वो आप ग्रुप Sure. में I शेयर have करें। I have dropped in the chat box. There are ओके, the links. Also, I यस, have shared the contact number. So you ओके, parents, you can connect with us, and if you have any queries regarding the session, each link and the contact number is given box.
ओके, थैंक यू सोनम। सो पेरेंट्स, आपके साथ जो अभी नंबर शेयर किया गया है, चैट बॉक्स में लिंक शेयर की गई है, लिंक जो है वो टेस्ट के लिए है। मतलब कि हम लोग जो मैंने आपको पहला टेस्ट बताया था, राइट, यू कैन सी इन माय स्क्रीन, दैट इज एप्टीट्यूड एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो बेसिकली ये दो टेस्ट आप वैसे बच्चा अगर देता है कहीं और से, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 5,000 रुपीज, राइट। आप 5,000 रुपए पे करके आपके बच्चे को ये टेस्ट दिलवाते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, ये एक आइडियल रेट है जो हर जगह लिया जाता है, बट वी एज एन इक्वल एकेडमी, हम लोग आपको ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आप आज ही रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड थिंग, कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, दैट वी हैव 3 प्राइसिंग प्लान्स फॉर योर किड्स for the student mentorship program, that is 1,999, 4,999, तो ये तीनों में आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं। सोनम, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज शेयर द पेरेंट्स द QR code for getting the discount. So I'll share इसमें, it. I'll हाँ, share the link also. ओके, डन। देखिए, सोनम ने आपके साथ शेयर किया है लिंक एंड कोड, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको 5,000 का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपका बच्चा वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए अभी भी। लाइक वी आर ऑन, अगर आप पेरेंट्स कोई भी QR कोड के थ्रू या पेमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज लेट अस नो। अगर आप कहीं पे भी स्टक होते हैं, वी विल हेल्प यू फॉर दिस सेम। एंड अगर आपको किसी को भी अब क्वेरी है, तो आप लोग आपका ऑडियो ऑन करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वी आर हियर। एनीवन फ्रॉम द पेरेंट्स वांट टू आस्क एनीथिंग? Yes, ma'am, I have one query. This one-on-one counseling sessions, will it take place in person or over video call or online? I mean to say, it would be online or offline. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी ऑनलाइन सर, राइट, जिसमें आप ऑडियो वीडियो थ्रू यू कैन डिस्कस, और ये पूरा पर्सनल रहेगा। मतलब कि जो हमारे सर्टिफाइड मेंटर हैं उनके साथ और आपके और बच्चे के साथ का पूरा पर्सनल सेशन होता है, इंडिविजुअल सर। इट विल बी ऑनलाइन, ये पूरा ऑनलाइन है सर। Thank you, ma'am. जी। सो इसमें सर लाइक क्या है कि मैंने जो बेनिफिट्स बताए, और देखो बच्चे का टेस्ट दिलवाने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू गेट एन आइडिया अबाउट योर चाइल्ड्स एकेडमिक्स पार्ट एंड देयर पर्सनालिटी पार्ट, जो कि जानना बहुत जरूरी है अभी के स्टेज में, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत सारी क्लैरिटीज आती हैं, बच्चे का विजन क्लियर होता है। सो एनीवन एल्स, जिनको कोई भी क्वेरी है, प्लीज आस्क अस, क्योंकि जितने ज्यादा आपके डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व होंगे, उतना ज्यादा आपको इजी रहेगा डिसीजन लेने में आपके बच्चे के करियर के लिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपके मन में कुछ भी क्वेरी है, आप प्लीज पूछिए, एनीथिंग। Also, the link and the coupon code which I have shared in the chat box not remain once we all leave the meeting. So if you want, you can copy it somewhere else in your system to use it afterwards. Also, I would request every parents to please share your feedback regarding this our webinar, because that is really going to help us for further. तो मैं सबसे There request is a करूंगी कि feedback please form आप link लोग, also. Yeah, जी, correct. आप लोग प्लीज आपका रिव्यू जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट। आपका जो रिव्यू हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आप चैट बॉक्स में भी आप हमें लिख के बता सकते हैं कि हाउ वाज योर सेशन, एंड आपको ये हेल्प किया कि नहीं किया, वो भी आप प्लीज बताइए। एंड एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू ऑल द बेनिफिट्स जो आपके बच्चे को मिलेगा ये मेंटरशिप प्रोग्राम से। एंड यूजुअली देखिए, ये सारी चीजें अब्रॉड में बहुत चलती हैं, और इसी के बेस पे ही बच्चे अपना आगे का एजुकेशन का सब डिसीजन लेते हैं। बट इन इंडिया क्या है सर, कि इतना अवेयरनेस नहीं है अभी पेरेंट्स और बच्चों को। सो वी आर मेकिंग देम अवेयर कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना ज्यादा हैफ्टी अमाउंट पे कर रहे हैं आपके बच्चे के स्कूल, ट्यूशंस, सब चीज के लिए।
तो यही लगता है एक छोटी चीज है जो कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपके बच्चे के करियर पे पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होगा ये मेंटरशिप प्रोग्राम से. So I would request you to please think once again for this. So I hope the time is like it's over. And thank you so much, Mr. Gaurav, for sharing your valuable feedback. It's really important for us. And अभी आप लोग जैसे कुछ भी आपको इश्यू आता है रिगार्डिंग द टेस्ट, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, इफ यू मेक ऑनलाइन पेमेंट, लाइक आज के दिन में आप कभी भी करते हैं, आपके पास ऑलरेडी सोनम मैम ने ऑलरेडी आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, सो यू कैन गेट इन टच विद अस इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल मेकिंग द पेमेंट. So Sonam, I think Yes, सबका if parents do not have any queries, we would wind up the session. I would like to thank Shraddha. Thank you so much for the wonderful explanation of the career mentorship program. I would also like to thank Ramakrishnan sir for giving such an insightful session. Thank you, sir, so much. So yes, if there is no more queries, we are winding up the session. Thank you for everyone for participating today. Thank you so much. Yeah, thank you, everybody. Thank you. Take care. Thank you.